दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये युवा सम्मेलन एक कर्टेन रेजर है 11वें राष्ट्रीय PUCL सम्मेलन के लिए, जो कि कल और परसों होने जा रहा है। बताइए मत, कैसे आना हुआ? ये हमारी बड़ी बहू है, ये जरा पेट से है, वो आप करते हैं ना। अम्मा जी, डॉक्टर साहब, इसकी लिंग जांच कराओ। जरा मेरी बीवी, तो जरा लिंग जांच कराओ। ये क्या कह रहे हैं आप? पता है आपको लिंग जांच कराने से आपको 6 साल की कैद हो सकती है। अरे डॉक्टर साहब, जो आपको चाहिए वो हमारे पास है। लिंग जांच? अरे भाई तो क्या कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे डॉक्टर, अरे डॉक्टर साहब, बताइए आपको बेटी है तो क्या कर रहे हैं? ठीक है, किसी को घर में पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल तमाशा नहीं होना। डॉक्टर बताइए, तेरे को क्या लगता है क्या होगा? माता जी, दिल तो कह रहा है बेटा ही होगा, देखते हैं क्या होता है। आधे घंटे बाद। आपने जो कहा था वो हो गया। छोरी थी, गिरा दी। मुसीबत टली। कोई चिंता नहीं है, पैसा गया। ये आप लोगों ने बिल्कुल सही नहीं करा। मुझे मेरी बेटी चाहिए। आप भी तो किसी की बेटी हो, घर की लक्ष्मी होती है बेटी। आपने मेरी बेटी को करा। बेटा हो या बेटी, फर्क क्या पड़ता है? मुझे मेरी बेटी चाहिए। अरे चुप रह। बेटी 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 कहां से? ना दादी, तमाशा ना बेटा, ना जाने कितने दुख लिखे हैं हमारी जिंदगी में। So, the first session, which is based on youth democracy and human rights, setting the context and the challenges, would be chaired by Professor Prabhakar Sinha. कि अगर हम इसके पहले कि हम मानवाधिकार संगठन से जुड़ने को आपको कहें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको ये बात बतलाएं कि क्यों आपके लिए मानवाधिकारों के संगठनों के साथ काम करना आपके लिए आवश्यक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जितना विनाश हुआ था, खासकर कि यूरोप वगैरह में, तो शायद ही कोई देश बच गया था जहाँ की नौजवान हो वो अपंग नहीं हो गए हों। आर्थिक दृष्टि से बर्बाद हो गया था पूरा यूरोप। तो विश्व युद्ध में विजयी होने के बावजूद एक एहसास विजयी राष्ट्रों के नेताओं को हुआ कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सवाल हार जीत का नहीं है, मानव जाति के संहार का है। क्योंकि तब तक न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हो चुका था नागासाकी हिरोशिमा में। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है और जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता है, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा मुद्दा ये नहीं होगा। डेमोक्रेसी रहेगी या डिक्टेटरशिप रहेगा ये नहीं मुद्दा होगा। मुद्दा ये होगा कि जीवन ही का अस्तित्व विश्व में रहेगा ये नहीं। कि मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए शांति की ज़रूरत है। दूसरा एहसास ये हुआ कि शांति ताकत से पैदा नहीं की जा सकती है। ताकत से अगर शांति पैदा करने का प्रयास करेंगे तो शांति नहीं होगी, युद्ध होगा। युद्ध को अननेसेसरी, अनावश्यक बनाया जाए। और इसके लिए वह तलाश शुरू हुई कि क्या करने से हम पूरे दुनिया में ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं महसूस हो। तो दो बातों की तरफ ध्यान गया। एक तो अन्याय जो राज्य, जिसको सरकार के रूप में आप जानते हैं, अपने यहाँ के नागरिकों पर करती रही है, पूरा इतिहास रहा है, जिस तरह का दमन होता रहा है, उसका खात्मा। और दूसरा साथ साथ ये हुआ कि उसके खात्मा करने से ही समस्या का निदान नहीं होगा। ठीक है, लोगों के ऊपर अपने सरकार ने अत्याचार बंद कर दिया, मगर लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों पर दूसरे तरह का आर्थिक दृष्टि से उनका शोषण हो रहा है। कुछ लोग समाज में बहुत अमीरी की ज़िंदगी जी रहे हैं, दूसरे लोग भूखे मर रहे हैं, तो फिर भी शांति नहीं होगी। इसीलिए जब आप मानवाधिकारों की घोषणा को आप देखेंगे तो दो भाग में है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स।
जिसमें दो चीज़ें कही गई कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, वो निगेटिव हैं इन द सेंस कि सरकार ये वादा करती है कि हम आपके साथ आपकी जान नहीं ले लेंगे, आपको बेवजह जेल में नहीं रखेंगे, आपका टॉर्चर नहीं करेंगे, आपको न्याय देंगे, फिर आपको जनतंत्र देंगे, ये नागरिक अधिकार। मगर साथ साथ एक दूसरा जो हिस्सा है मानवाधिकारों की घोषणा है वो है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। मगर सत्ता में उनका जो अपना स्वार्थ होता है तो सैद्धांतिक तौर से मानते हैं, कानून बनाती हैं, पूरी दुनिया का ये है। सारे लोगों ने वादा किया है यूनाइटेड नेशंस में कि धीरे धीरे हम मानवाधिकारों को अपने नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे और जिससे कि दुनिया में शांति बहाल हो सके। मगर जब शासन करते हैं वहाँ जिनके हाथ में सत्ता होती है उनके हक में सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे अशांति होती है और उसके लिए दमन का कानून बनाते हैं। मानवाधिकार की घोषणा में एक बात प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कही गई है, वो ये कही गई है कि मानवाधिकारों को अपने नागरिकों को इसलिए उपलब्ध कराइए ताकि अपने ऊपर होते हुए अत्याचार से निजात पाने का अन्य कोई उपाय नहीं पाकर लोग विद्रोह को बाध्य नहीं हो जाए। वो विद्रोह का रास्ता सही है उसके बारे में नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारी मान्यता है कि हथियार से जो समाज बनेगा उसमें हर बात का फैसला हथियार से होगा, इसलिए वो बेहतर समाज नहीं बनेगा, इसलिए सहमति नहीं है। मगर विद्रोह करने वाले कोई पागल हैं, अन्याय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, मगर विद्रोह करने की स्थिति पैदा करने की जिम्मेदारी उन लोगों को जो देश को चला रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में जितने कानून बने थे, ब्लैक लॉ जिसको हम कहते हैं, उसकी तुलना में आज़ाद हिंदुस्तान में ज़्यादा संख्या में भी कानून बने हैं और अन्यायपूर्ण कानून बने हैं। मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ, जिसमें डॉक्टर विनायक सेन थे, जिस कानून में राजद्रोह, सीमा आज़ाद थी, राजद्रोह। अब अंदाज़ कीजिए इसी राजद्रोह में महात्मा गांधी पर भी मुकदमा चला, तिलक पर मुकदमा चला। अच्छा, महात्मा गांधी से बड़े खतरा तो ये जो अंग्रेज़ों के लिए महात्मा गांधी थे उससे बड़ा खतरा तो विनायक सेन नहीं है, सीमा आज़ाद नहीं है इस सरकार के लिए, तिलक से बड़ा खतरा नहीं है। मगर मालूम है सज़ा क्या मिली? गांधी जी को अंग्रेज़ों ने 6 साल की सज़ा दी, तिलक को अंग्रेज़ों ने 6 साल की सज़ा दी और जनतंत्र हिंदुस्तान की सरकार ने दोनों को आजीवन कारावास दिया। ये कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं कि सरकार की नीति ऐसा है कि देश के संसाधन, जो मैंने मानवाधिकारों को कहा कि देश के जो संसाधन हैं उनका इस्तेमाल ऐसे हो कि हर आदमी को अपने को बेहतर करने का मौका मिले। सरकारों की नीति है कि मुट्ठी भर लोगों के हित की रक्षा करें और बाकी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें। Along with injustice goes violence. Injustice cannot be maintained in society without the use of violence. Man is naturally a just animal. So the phenomenon of injustice is not something that is maintained on its own, कि चलो अपने आप से जो अन्याय है वो चलता रहता है, ऐसे नहीं है। अन्याय के पीछे ताकत रहती है। अन्याय को बरकरार रखने के लिए कुछ लोग, कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं which keep that injustice in place because it is to their benefit. I wish to bring before you certain specific examples of the way in which injustice has been maintained in Indian society. Firstly, look at the phenomenon of violence. In Indian society, state-based violence is a generalized phenomenon. We think we are living in a peaceful society because the kind of background from which we come, the kind of societies from which we come, the kind of families from which we come are not affected in general by the violence with which injustice is maintained in this society. But there are large sections of the Indian population which are subjected constantly to
violence that is based on the power of the state. India has been an independent sovereign nation since 1947, 65 years. In those 65 years, there has not been a single year in which specific sections of the Indian population have not been subjected to the violence of the state. In the Constitution, there are certain injunctions to the state. There are certain instructions issued to the state on how we should run the state according to the ideas of the people who wrote the Constitution. And in that, in the directive principles of state policy, one of the important principles is that all state activity must be directed at the elimination, at the reduction of economic equality. Even if you can't at one step make the society which is economically just, but still it is the duty of the state, it is the duty of all those who are involved in running the state to constantly strive to bring about a society which is more just tomorrow than it was yesterday. But instead of that, what we have, particularly what we have since 1991, when a policy decision was made to implement globalization and liberalization programs, was that it is legitimate. It is a legitimate strategy to ensure growth, to encourage inequality in society. Human rights and human rights workers protests against this injustice. We want to bring about a society in which everybody can enjoy justice and peace. The Salva Judum, of which most of you must have heard, Salva Judum involved distributing arms to ordinary citizens so that they could force other citizens to follow the norms of the Salva Judum. But as long as the Salva Judum was existing, as long as it was going on, the people involved in the Salva Judum forced 700 villages, people from 700 villages, to leave their homes. Many of them went into the jungle, many of them went across the border into Andhra Pradesh, many of their villages were burnt, lot of people were killed, lot of women were raped. The human rights organizations formed a joint platform across the country to investigate the phenomenon of the Salva Judum. And before the state, before the instrumentalities of the state, before the justice mechanisms of the state could give their view, which is of course much more authoritative than ours, but the human rights organizations, it is a matter of pride for us that we were one of the first platforms from which we could announce that the Salva Judum was a mechanism in which the state makes war on its own people. But it's not only these extreme examples of violence that constitute injustice in society. I would like to tell you about another form of violence, what is called structural violence. A form of violence in which injustice is institutionalized in society, in which it becomes part of the ordinary picture.
one form of violence that I want to talk to you about is hunger and famine. And the second kind of violence that I would like to talk to you about is sedition. The kind of jurisprudence which forced me to go to jail, which forced my colleague Seema Azad to go to jail, which has brought 3,200 people protesting peacefully against nuclear power in Kudankulam, brought charges of sedition against 3,200 people. The law says that there has to be an application of mind before you charge anyone with sedition. So the superintendent of police in Kudankulam must have applied his mind to the cases of the 3,200 people who have been charged with sedition. So what about hunger and famine? In 1943 there was a famine. 3 million people died in that famine. 3 million people from Bengal died in the famine. I knew about the famine when I was a child because my mother told me stories about that famine. But how was that famine brought about? That famine didn't happen because of natural causes. Famine didn't happen because there was a failure of agricultural production. There was enough grain to feed the entire population. Famine is automatically associated in our minds with shortage of food. 1943 famine, there was no shortage of food. So why did the famine occur? Winston Churchill, whose name all of you must have heard, everybody says he's a great man, he was a racist. And Winston Churchill ordered that all the grain from Bengal should be sequestered, should be taken away to feed the British war effort. The rice that was removed from Bengal was supposed to have been replaced by Australian wheat, but even that Australian wheat which was supposed to replace the rice in Bengal was taken away to feed the British war effort. The Japanese had conquered Myanmar by that time. So the British were afraid that the Japanese might cross the Bay of Bengal and attack India from Medinipur, which is in South Bengal. So they executed a scorched earth policy. A scorched earth policy means you burn all the crops and you destroy all means of transport for the crops. You take away the bicycles, you take away the bullock carts. The grain is transported in boats, so you burn the boats and sink them in the river. This is what the British did in 1943. I am telling you this example not because I want to create hatred against Winston Churchill. I am just telling you this because you must realize that injustice does not happen of its own accord. Injustice happens because some people, some interests want it to happen and they have the strength to make it come about, to bring it about. And it is our duty as citizens for justice, for human rights, to oppose these forces. So what relevance does the Bengal famine have to us today? I think you should understand that there are large sections of the Indian population today who are living in a state of famine, who are living permanently in a state of famine. India is the nation having the largest population of malnourished people, malnourished children, and as I'll shortly come to tell you, malnourished adults in the world.
the highest population of malnourished people in the world lives in Sare Jahan se Acha. So, what is the minimum body mass index which is normal? Tell me. 18.5 is the body mass index which is regarded as the critical boundary between